even travel plans and everything, like even the smallest things, even my teacher trainings and all. इनफैक्ट जब मैं मैजिक बुक में आई तब मैं सिर्फ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की असेसर थी, बट जब आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग ट्रेनिंग्स फ्रॉम द सेंटर, तो मेरा तो वो भी सपना पूरा हुआ है. Lovely, lovely. So now we are live, and I will just share, start now. So thank you, Maria ji, for your sharing, and we'll take maybe couple of sharings, as and when we have time. जो नए लोग हैं, उनको शुरू में टाइम लग सकता है टू बिलीव कि सिर्फ सोचने से क्या होगा. हम सबको जब नए थे, सबको अपना अपना एवरीबडी इज़ टेकन देयर ओन टाइम टू बिलीव कि हाँ सिर्फ सोचने से ये चीज़ हो सकती है. But it really works, it does wonders. So this is going to be an amazing journey for all of us. And मैं भी आप सबके साथ बस प्रैक्टिस ही कर रही हूँ. So I've practiced it few times with Ashmin Munchal ma'am and few others, and I just thought कि अभी मैं खुद भी हम सब साथ में प्रैक्टिस करेंगे. So let's स्टार्ट मैजिक बुक. सो पहले 4 दिन हमने सीक्रेट मूवी देखी, उसका फेसबुक पे या जूम पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो जिनको देखना है आप देख सकते हो. एंड आज से हम मैजिक बुक स्टार्ट कर रहे हैं. एंड इट्स सो सीक्रेट मूवी में हमें क्या सोचना है और किस तरह से सोचना है, कहाँ पे हम रुकते हैं, तो वो जो थॉट वाइज है, आइडिया वाइज है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस सबने शेयर किए हैं. बट उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कि चलो पॉजिटिव हर सिचुएशन में रहना है, तो वो कैसे करेंगे. सो मैजिक बुक हेल्प्स अस विद टेकिंग एक्शंस एवरी डे. So secret movie tells us what to think, how to think, and magic book tells us actually like how to practice that in day to day life. I will just share magic book. मारे जी, which what do you suggest, English open करूँ या हिंदी. चलेगा, कोई भी चलेगा. Ask the people whom are like what they want. So that would be more better ना. ओके. और इंग्लिश में आप हम पढ़ के या तो फिर हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी हो सकता है. हाँ हाँ बिल्कुल. चैट में आ गया इंग्लिश. ओके. चलो फिर मैंने भी इंग्लिश ही ओपन किया है, तो मैं आज के लिए तो इंग्लिश ही शेयर कर देती हूँ. द फर्स्ट थिंग आई फाउंड वाज इंग्लिश वाला. मैं शेयर कर देती हूँ. इफ़ पीपल हैव प्रेफरेंसेस आप बता सकते हो. सो मारिया जी, कैन यू सी माई स्क्रीन. या. ओके. तो हम फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट कर दें. आप बताओ, आई स्क्रोल एंड यू बी द रीडर, आई एक्सप्लेन इट. Yeah. So we are starting with the magic book. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. So I'll explain this first paragraph. So one word changes everything. This law of attraction and magic book. These two books, when Rhonda Byrne started, उनके लाइफ में बहुत सारे breakdowns थे in every area. But with this secret movie and magic book, she has changed her world, and these books have changed everybody's world, whoever has read them. So we will uncover ये mystery going forward कि ये कैसे होता है. But you take your own sweet time to believe it, but trust me, it's an amazing book, and it's an amazing journey to read this book. So it's a turning point in my life, and I hope आप लोगों को भी you will find that like this book is a turning point in your life too. Yeah, Maria ji. In the magic, Rhonda Byrne reveals this life changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28 journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are,
No matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. So true. Every word is true. The magic is going to change your life. Um, okay. Dedicated to you, may the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. Yes. So exactly what I said, same thing. Ki this is going to change every aspect of your life. Like, the life before Magic Book and life after Magic Book is going to be a totally different journey. So this is the acknowledgement part which the author has shared. When I first sat down to write the book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more all of the whom contribute their expertise until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you, thank you, thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and the research skills to help me unite the discoveries of science with the words Sorry, मैंने थोड़ा font बड़ा करने का try किया. Sorry. who Yeah. contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of the science with the words of the religion. Thanks to the other, यहाँ पे thanks to my editor, Cindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Shamus Hore and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me to take the new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kerr, who heads up a colossal creative team, Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up with the photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members who behind the scenes work is invaluable. Don Zick, Mark O'Connor, Mike Gardner, Laurie Sharapov, Corey Johansson, Sheely, Peter Byrne, and my daughter Haley. So, Thank you, thank you, thank you to my publishers, Atria Books and Simon and Scuster, to Caroline Rady, Judy Kerr, Darling Dilolo, Twist Fan, James Pervin, Kimberly Goldston, and Isolso. I am blessed to have such an amazing team of people. Thank you, thank you, thank you to Angel Martin Villois for his spiritual guidance, love, and wisdom. To my sister Pauline Vernum and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of the centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time, that indefinable, life changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. सो ये पढ़ नॉर्मली हम जब बुक पढ़ते हैं तो मैं तो ये पहली पोर्शन छोड़ ही देती थी बिफोर मैजिक बुक. आई यूज टू थिंक कि ये पहले पोर्शन पढ़ के क्या फ़ायदा है, राइट? सो वी नॉर्मली स्किप दैट, मोस्ट ऑफ द पीपल स्किप दैट. बट इसका पर्पज़ ये है कि हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हमारी जर्नी में कितने सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है. जैसे इस एक बुक के लिए देर आर सो मेनी पीपल हु हैव हेल्प इन सिमिलर वे इन आवर लाइफ डे टू डे. There are so many people who help us and we just take them for granted. So we
the more we are thankful to them, the more we appreciate people and things that we have in our life, the more abundance we receive. So the first step to live a good and happy and positive life is to be grateful to all the people who are already there, part of your life, who are already doing things for you. Yeah, Maria ji. Do you believe in magic? So I didn't. I came from the world of logic, and when I started, I did not believe. As in, I believe कि your thoughts have power, because मैंने बचपन से मैं पढ़ते आई हूँ कि जो आप सोचते हो वो चीज़ें होती है, बट वो फेथ, उसमें नॉलेज था कि ये चीज़ें होती है, योर थॉट्स हैव पावर, बिकॉज मैंने हमारे रिलीजियस बुक्स में भी पढ़ा था कि मन वचन काया, सो सिर्फ आप सोचते हो, आप बोलते हो और आप सच में करते हो, ये तीनों चीज़ों से जो आप करते हो उसमें इक्वली पुण्य और इक्वली लाइक गुड एंड बैड हैपन्स इक्वली इन द सेम वे. सो आई डिड नो दैट, बट आई डिड नॉट नो कि कितना इम्पैक्ट होता है, क्यों होता है, हाउ डज दैट हैपन. जी. Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1960 to 1990 writer. That's very, Remember, yeah, that's very true. Unless you believe it, unless you, put your energy and focus in it, you will not find it. Yeah, बढ़िया. remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. आई थिंक वो बचपन में जो एक एक्साइटमेंट होता है हर चीज़ को देखने का, समझने का, वो एक अलग ही मज़ा होता है, राइट. इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स, सीइंग अ बटरफ्लाई इज सो एक्साइटिंग, सीइंग अ बर्ड, और किसी ने कुछ छोटा सा भी एक टॉफ़ी भी ला के दिया, तो इट इज़ सो मच फन, राइट. एंड वी प्रॉब्लली लाइफ के रेस में ये सारी चीज़ें भूल गए थे. नाउ आई एक्चुअली बिकॉज ऑफ कि रोज़ आपने 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है. नाउ आई लुक फॉर पॉजिटिविटी थ्रू आउट द डे इन माई लाइफ. रात को जब मैजिक रॉक लेके सोते हैं, तो नाउ आई लुक फॉर पॉजिटिविटी, लाइक एंटायर डे नाइट, तो दिन भी शुरू उसी से होता है, रात भी उसी से शुरू होती है. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक कि लास्ट 2 3 4 साल में जब से मैजिक बुक आई है लाइफ में, कितनी सारी चीज़ें हुई है. सो आई स्टिल फील दैट childlike excitement, when I think something and it happens. So every day, every week, what I do is I write few wishes कि मुझे I want these things to happen in this week. ओके, तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, नॉट लाइक ह्यूज. आई राइट स्मॉल स्मॉल थिंग्स एवरी वीक. तो समझो मैंने 3 या 5 ड्रीम्स लिखे हैं. ओके, सो आई राइट, व्हेन आई राइट ड्रीम्स, आई राइट बिग ड्रीम्स. बट जब हर वीक मैं क्या करती हूँ, एक छोटी छोटी 5 चीज़ें लिख देती हूँ विच आई वॉन्ट टू शुड हैपन दैट वीक. एंड जब वो होती है तो बहुत मज़ा आता है मुझे कि वाह यार ये चीज़ हो गई. सो आई हैव रिकनेक्टेड विद अ फ्रेंड जिससे मैं 15 या पता नहीं 18 सालों से मेरी बात नहीं हुई थी. लाइक चाइल्डहुड में मामा के घर पे जब जाती थी तो वहाँ बाजू के बिल्डिंग में वो रहती थी. सो लाइक उस वक्त तो कहाँ ऐसा कुछ था कि यू विल कीप इन टच और समथिंग. तो आई हैड लॉस्ट टच विथ हर, शी इज़ इन अ डिफरेंट सिटी. तो आई रिकनेक्टेड विथ हर, आई रिकनेक्टेड विथ सो मेनी पीपल. मेरी एक फ्रेंड थी 12th की जो यूएस चली गई थी, और एक नेबर है जो लंदन चला गया था. सो आई हैड लॉस्ट टच विथ सो मेनी पीपल. एंड जब भी सोचा किसी दिन कि अरे हाँ इसका क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसके साथ ये किया था, वाइल टॉकिंग टू सम फ्रेंड और समथिंग, कुछ याद आया, उस पर्सन के बारे में सोचा, और सच में वो लाइफ में जब वापस आता है तो अभी भी मुझे बहुत मज़ा आता है. आई फाइंड इट सो लाइक वाओ, आई मीन इज दिस रियली हैपनिंग ऐसे. सो आई थिंक दैट दिस बुक हैज़ ब्रॉट बैक ऑल दो स्मॉल वंडर्स एंड स्मॉल हैप्पीनेस इन लाइफ. तो वो बोलते हैं ना कि छोटी चीज़ों में ही खुशी है, हैप्पीनेस लाइज इन स्मॉल थिंग्स. तो वो सच में वापस आ गया है. या You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to that magical night of Christmas.
Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. आगे का भी पढ़ लीजिए. There is an executive feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us, and we became delusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. That's why I think we enjoy with children, right? Because there is no worries, there is no planning, there is no, like ये होना चाहिए वो होना चाहिए. So you are just in that moment. You're enjoying in that moment, not having too many expectations, not worried about what will come, what will happen, will things happen. So I think हम present moment में जीना भूल जाते हैं. So there are books, Power of Now and such, which tells us that if you're constantly thinking about your future, जो आपने अचीव किया है, जो इस मोमेंट में आपके पास है, आप उसको एंजॉय नहीं करते हो. So all of those things which we had forgotten, we just kind of wake up in the morning, we try to achieve our जो भी आपके goals है, आपकी duties है, we do that, and then we rather focus on things that didn't work out. So this book will shift the entire focus. So जैसे वो स्टोर लाइक आपके सामने एक ग्लास है, आधा खाली आधा भरा हुआ है. नाउ नॉर्मली वी ट्राई टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. ये बुक जब भी स्टार्ट हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल हैव क्वेश्चंस कि मैं ये कैसे सॉल्व करूँ, वो कैसे सॉल्व करूँ, राइट? बट what happens is we are focusing all our energy on the glass which is half empty, right? We हम सबकी वो tendency है, मेरी खुद की भी वही है. Even now every day I wake up with few questions in mind, but now instead of asking questions to somebody, trying to solve it myself, I just surrender it to universe. Every day it's an effort. ठीक है, I will not worry about this, I'll surrender it to universe. It's a everyday effort, but slowly you learn it, slowly like learn to surrender easily. But that is the whole point कि हम पूरा दिन क्या करते हैं, यही सारे रैट रेस जो बोलते हैं, इसमें भागते रहते हैं. सो दिस बुक एक्चुअली चेंजेस आवर पर्सपेक्टिव कि ग्लास जो आधा भरा हुआ है उसके ऊपर फोकस करो कि जो चीज़ें आपके पास है, आर यू फोकसिंग ऑन दैट, आर यू एन्जॉइंग दैट, और आर यू ओनली वरीड अबाउट कि आगे मुझे बाकी का चीज़ें कब मिलेगी. या मारिया जी. I am here to tell you that magic, once you believed in, is true, and it's the delusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have even given up in believing in the magic. You may not see the end of fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamt of for so long suddenly happening. You will never know how everything weave together for your dreams to come true because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day, like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life changing knowledge was hidden with a secret text.
ये आगे का भी पढ़ लीजिए. A great mystery is revealed. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and has been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him. आगे का भी पढ़ लो. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it's a new world, and sorry, when you know it, a new world will have opened for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true as but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words: if you are grateful, you will be given more. You will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember, when God proclaimed, sorry, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. सो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं. एंड लाइक दिस बुक इज सेइंग कि जिसके भी पास ग्रेटिट्यूड है दैट पर्सन विल बी गिवन मोर, दैट पर्सन विल रिसीव अबंडेंस. और जिसके पास नहीं है, जो है वो चीज़ भी ले ली जाएगी. सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपन्स. जो भी चीज़ आप इग्नोर करते हो वो चीज़ ऑटोमेटिक. ओके, आई विल स्टॉप द शेयरिंग. सो जो भी चीज़ आप इग्नोर करते हो आपके लाइफ में, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से चली जाती है, राइट? इफ़ समबडी इग्नोर्स यू, यू गो अवे फ्रॉम देयर, राइट? सो इफ़ यू डोंट वैल्यू समथिंग, यू आर गोइंग टू लूज दैट थिंग. एंड changing your life or living your dream life doesn't need a lot of physical efforts. It needs more mental and emotional efforts. Normally it's said that 80% is mental and emotional work and 20% is physical work. That's how normally it is said. इसीलिए बिफोर वी स्टार्ट अ जॉब हम 15 साल तक पढ़ते हैं, राइट? एटलीस्ट 15 और 17 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वी डोंट से लाइक हाँ चलो 2 साल पढ़ा, अभी चलो लेट्स स्टार्ट अ जॉब और अ बिजनेस. एंड अभी लास्ट फ्यू ईयर्स से तो लोग और ज़्यादा पढ़ते हैं, राइट? लाइक दे स्टडी इवन फर्दर. कुछ लोग होते हैं जो और आगे पीएचडी या मास्टर्स और कुछ ना कुछ और करते रहते हैं. अगर आप आईटी के इसमें देखोगे तो हर साल यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ. It's expected that you will learn new technologies which are coming every year. So most of the time what happens is we have to do the mental and physical work, or a mental and emotional work, and then the physical work automatically happens. And ये otherwise करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. So that is why we first why we are practicing this book is to develop that muscle. जो gratitude और positive thinking का muscle है, that needs a lot of work. जैसे जिम में या कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो वी फर्स्ट लर्न टू डू इट एंड देन वी डू इट. सो दैट इज़ द होल पर्पस. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी. एवरी बुक इन दिस every word in this book is magical and truly very impactful. It's a very short book. जब मुझे किसी ने स्टार्ट में बोला था कि रोज़ 2 घंटे 1 महीने के लिए ये बुक पढ़ना है साथ में ऑन जूम, तो मैंने बोला था यार इतना छोटा सा बुक है, 5 मिनट में तो वो चैप्टर पढ़ लेंगे, तो क्यों इतना टाइम करना है. तो मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी दैट
friend of mine actually was following up with me for a week, and finally I thought chalo try karte hain, but then it's been a wonderful journey. So for today what I will suggest is, जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगी वैसी तीन चीज़ें एटलीस्ट आप लिख लो नोटबुक और पेन में, नोटबुक और पेन लेके, और एंड राइट एनी थ्री स्मॉल विशेस कि मुझे आज ये डिश खानी है, या मुझे आज इससे मिलना है, या आई वॉन्ट समथिंग लाइक वेरी वेरी सिंपल बेसिक थिंग्स, that I want to talk to somebody, or I want somebody to appreciate me. I want like I want to see some series, I want to see some in like कोई आपका क्वेश्चन है उसके रिलेटेड कुछ आपको मूवी या कुछ ना कुछ मैसेज कोई भेज देगा. सो एनीथिंग दैट यू वांट, three small things. So when you write dreams, write whatever you want, right? But वो आपके आंखों के सामने जब धीरे धीरे डेवलप होता है, जब every day something opens up to you, then you enjoy that process, right? So I really love doing this कि बड़े ड्रीम्स लिखो पर उसके छोटे छोटे चीज़ें बना के रोज़ हर हफ्ते में लिखती हूँ. एंड व्हेन दैट हैपन्स, इट्स वेरी अमेजिंग, एंड आई एम लाइक वाओ, इस हफ्ते ये हो गया, या इस आज के दिन में ये हो गया. सो इट विल कीप यू एक्साइटेड, इट विल कीप यू गोइंग, और आपका फेथ धीरे धीरे इस चीज़ में बढ़ता जाएगा. So that is all I have to share for today. And if anybody wants to share their experience or questions only in terms of ये जो हमने आज कवर किया, then please do. और आप ग्रुप में भी डाल सकते हो, आपको कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं या अभी हमें टाइम नहीं मिलता है टू कवर इट इन द सेशन, आप ग्रुप में भी डाल सकते हो अपने क्वेश्चंस. आई नॉर्मली कीप ग्रुप ओपन 1 or 2 hours in the day. So if you want, you can put it in the group as well. Thank you, Maria ji, a lot for being the reader. And thank you everybody. Thank you, Rimpal ji. And thank you everybody for attending and walking on this journey with me. Thank you so much. Lovely Thank you. session, ma'am. See you all, everybody. Have a magical day.